Nida, is it okay to start this? Yeah. So hi, very good morning to all of you. And on behalf of Insurance Manager, I would like to wish you all happy and prosperous 2024. Also would like to thank all the participants for taking out the time on this weekend and attending this session. To introduce Insurance Manager, we are a 17-year-old organization catering to general insurance services to SME and MSME industries. With this rich experience, we would be conducting this webinar sessions on the different insurance product for the next 1 year, and that would be starting today with the Workmen compensation product. This session will be conducted by our director, Mr. Pramod Bhuvan, who had been a veteran in this industry and with the experience of more than a decade. And also, he would be jointly assisted by Ms. Monica Makwana, who has been part of this insurance manager since the time of the inspection. Uh, and she'll be educating us on the claims and the challenges. With this, I would like to call upon Pramod sir to take this ahead and give us the insight on this product. Over to you, Pramod sir. Thank you, Pratik. A very good morning and warm welcome to all the attendees. We would like to make this session as interesting as possible. We have tried and picked up a very important topic, workman compensation, with our experience in interacting with corporates, especially the HR fraternity, who handle and manage such claims on day-to-day basis. We have identified few challenges in policy design, coverages, and claims process. So here we are here to try and unfold those challenges. We'll try to highlight and appraise you as to what are the way outs and how can you handle and manage claims in more efficiently. Very briefly about me, I'm Pramod Bhuvan. I head the corporate solutions group. I've been in the industry since 18 years now. We've advised corporates, more than 500 corporates on policy coverages, claims process. About the organization which I represent, InsuranceManager.com is in existence since 2005. Again, currently servicing around 500 plus corporates. We have dedicated teams internally for underwriting claims, policy operations, which make us a full-fledged insurance intermediary. We are here, as I told you, to talk about workman compensation today. I'll take you through the session. But before I start, I'll just tell you as to why this session and what you can expect from us. So in the first phase, I'll talk about what is the construct of workman compensation, what are the coverages under the policy. We'll try to burst few myths and try to appraise you actually what are the facts. We are also trying to compare here, because this request was coming from the HR, that how a ESIC benefit versus a group personal accident versus workman compensation differs. What are the USPs? What kind of policies ideally you should go for if you are a manufacturing company or a company which is into services. And then will be the session for claims, where we will talk about the claims process, which will be taken over by Monica, and also the challenges related to claims. Now, okay, with this, I start the session. Thanks. Okay, so this is small AV. मेरा नाम राजेश पाटिल है और मैं एक साइट कॉन्ट्रैक्टर। कुछ महीने पहले मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया। हमारे 3 वर्कर्स को बहुत चोट लग गई। लकीली मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी अपने वर्कर्स के लिए ले रखा। ये पॉलिसी इतना बढ़िया है कि कुछ दुर्घटना होने पर वर्कर्स को अनेक प्रकार की आर्थिक सुविधा उनके पूरी तरह ठीक होने तक मिलती है। ये पॉलिसी नहीं, मजदूरों का सुरक्षा कवच है। अब देश का मजदूर ना रुकेगा ना डरेगा। आज ही sme.icici-lombard.com पे जाइए और पॉलिसी पाइए, सिर्फ कुछ क्लिक्स में। ICICI Lombard Business Insurance Solution जैसे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, मरीन ट्रैफिक, फायर, ग्रुप हेल्थ इत्यादि से देश के MSMEs और उनके व्यापार को सुरक्षित करने का वादा करता है, और हम उनके हौसले को सलाम करते हैं। Right. So this is today's agenda. We'll talk about, as I told you, introduction. We'll talk about coverages. We'll also talk very briefly about what are the details required to prepare quote and what are the factors which influence the premium rating for your industry. What are the ways to reduce on the premium? What are the ways to ensure that you take the right policy with the right coverage, inclusive policy, which we call this. Few myths versus fact we'll try to burst.
As I told you, we'll also try to cover the under point number 8 and 9 GPA versus employee compensation, and similarly ESIC versus employee. And then Monica will take over from claims process, documentation, what kind of amounts are payable under the policy, what are the challenges faced in WC claims, and so on. Okay. Here, I'll just briefly introduce the employee compensation. I'll not go more into the text. I'll just briefly. Okay, I would request the attendees to participate in this poll and check out your knowledge on the product. We will try to increase the quotient of the product knowledge as the session goes on. Thank you so much. Okay, so the employee compensation policy is nothing but an act only policy. Okay, it replicates the act, which is the Workmen Compensation Act 1923, later amended in 2010 and revised as Employee Compensation Act. I'll just briefly tell you why this amendment was done and what were the key takeaways. But it also covers the Fatal Accident Act 1855 and also the duty at common law, which is basically any civil law related claims also will be picked up if the employee goes. So how does these three impact us from the perspective of workmen compensations to be paid? So the first amendment regarding 2010, which was done, and the subsequent policy of Workmen Compensation Act being renamed as employee compensation. So even the CEO of the company comes under the gamut. A lot of time we get a request from the HR कि क्या हम सिर्फ blue collar, white collar किसको ले सकते हैं, contract employees. So all the contract employees, subcontract employees, even the CEO, any worker, whether administrative on shop floor, can all be covered. Fatal accident talks about compensation related to major disabilities and also death. And common law is something, if the WC commissioner is entitled for award compensation till 15,000 salary, but if some legal heirs or the employee is not satisfied with that compensation or that amount which is being paid or which is being declared as a award, they can still contest this compensation under the civil code. And if the court awards a higher compensation, they would be eligible for that payment. So the employee compensation basically talks about कि जब भी कोई employee or a worker factory या office में वो काम कर रहे हैं और during the course of employment अगर कोई death या disability या कोई temporary disability भी हो जाती है, तो ये policy इससे related जो financial compensation है, including medical expenses also will be paid related to the accident of course. अभी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या employee compensation will cover you only during the working hours? Yes, the answer is yes. It will cover only during the course of engagement with the organization. The policy will cover it. When you are not working, when you are on a holiday, when you are not in the working hours, this policy will not cover you. Okay, so again, a very important aspect. What are the coverages under the policy? क्या policy cover करती है, even though it's an act? Okay, there's one more question which just popped up. Right. So the policy covers you for accidental death. कोई permanent total disability हो जाती है. Permanent total disability is loss of 2 limbs, loss of 2 eyes. मतलब 2 हाथ या 2 पैर किसी के डैमेज हो जाते हैं या हैंडीकैप्ड हो जाते हैं जिससे वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो उस केस में कॉम्पेंसेशन ये पॉलिसी पे करती है. The policy also covers you for permanent partial disablement. Partial disablement is like loss of one leg, one hand, or maybe fingers, or one eye, and so on and so forth. So you may ask how it is decided whether it is partial or full disablement. So here a doctor gives a disability certificate, and basis that the insurance company will decide will replicate that same order which has been issued by the doctor. This is the percentage of disability. I'll come to the compensation amount at a later in the later slides. The policy also has a provision to cover the temporary total disablement, which is a very important feature in the policy. Sometimes the disability may be temporary in nature. Like for example, if you can see here, अगर कोई बंदा सीढ़ियों से गिर जाता है, उसे फ्रैक्चर हो जाती है, तो he may, और फ्रैक्चर होने की वजह से वो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते तक he cannot resume work.
in that case, this policy will still cover for the claims for that particular duration, and the policy will pay you for loss of income, which is a very important cover under the policy. This provision is there under the policy. In fact, iske alawa, the policy also has the provision to cover medical expenses, which we will see in the later slide. और अगर इस जैसे मैंने आपको बताया कि the recovery में अगर उसे after the disability, if it takes time to recover, and if the duration is long, even 3 months, 6 months, till such time the policy has a provision to pay for loss of income also. So this is also covered under the policy. Next slide. Right. So I was talking about what are the add-on covers under the policy. How can you make the policy more comprehensive? Okay. So when I say add-on covers, so there's a basic draft of the Workmen Compensation Act, but with a lot of requests from the HR fraternity, and also we seeing a lot of claims in this segment. So the product also has evolved, and a lot of insurance companies have filed for add-on covers under the policy, which makes the coverage more comprehensive. So the policy has provision to cover contractors and subcontractor workers, which is a very important feature, especially for manufacturing clients, where a lot of employees are engaged through contract and not on the payroll directly. The policy has a provision to cover occupational disease, which no other benefit policy, even for that matter, GHI or GPA, doesn't cover. So how does it work? Basically, if some factory, let me give you a couple of examples to understand occupational disease. For example, if there's a lot of dust which is generated in the factory, and due to over a period of time inhalation, if the employee or the worker starts giving tendency of respiratory diseases and comes to the organization for a claim for respiratory diseases or some disability because of that, or loss of productivity, loss of income generating factor, so this policy will pay for that claim. Similarly, occupational disease का एक और example हो सकता है. Lot of manufacturing companies have very high sound generating, उनसे काफी ज़्यादा sound generate होता है, जिसके against वो काम करते करते उनकी जो hearing जो audiometry है वो drop हो जाती है. और इस केस में भी अगर वो loss of hearing का claim लेके आते हैं, तो still this policy will cover. Similarly, compressed air disease, terrorism is covered under the policy. The policy has a provision to cover pan-India locations. Again, this is a very important feature in the policy. This is applicable for those companies where there are multiple units under the same company, unit 1, unit 2, कोई हिमाचल, कोई बड्डी, कोई दमन, कोई सिलवासा में है. So you have the provision to have all these units being covered under one single policy. More or less, it works like a floater policy. Administratively, it is more convenient to handle and manage. But also one more aspect, pan-India location works in case of if your employees are going for say example, any maintenance activity or installation activity at client place, which can be any undefined locations across India. So you have a provision to cover undefined locations also for your engineers and supervisors or maybe sales staff who are not located at the factory itself. There may be a sales staff which is all over the India. So that can also be covered under the policy. In fact, I also recommend very strongly to cover your office employee. So many a times it may happen that the factory is in Daman, the office is in Bombay. Bombay ke employees ka insurance nahi liya, but you have a provision to cover the Bombay employees also in the same policy under the Workmen Compensation, because as I told you, any administrative, managerial, supervisory function, even the CEO, the management staff can also be covered under the policy. The last add-on cover is the medical extension, which I feel is a very, very relevant cover, where now there are options to cover from 25,000 rupees to up to actual, which is whichever is opted. Medical expenses, not to be confused with group medical insurance, because here the medical expenses will be paid only in case of accidental injury resulting into medical expenses. Again, it can be on both OPD and IPD, which means अगर hospitalization हुआ तो भी ये expenses cover होंगे, नहीं हुआ तो भी ये policy cover करेगी. Means IPD treatment जहाँ पे आप admit नहीं हो रहे, just you're taking the primary care and then getting discharged in less than 24 hours, like for example a case of fracture. In fact, there are some insurance companies which give cashless facility also. In fact, we had a case where a heavy metal object had fallen on the head of one of the workers.
and he had to be hospitalized, and he was under coma for more than 25 days in the ICU section of the hospital, and the total claim was around 13 lakhs, wherein we extended the expenses were covered on actual, and the cashless facility was extended, which ensured that the employer had not to pay from their pocket. The insurance company directly paid to the hospital, which was a relief to the insured. Okay, so I go to the next slide now. With the add-on covers, we move on. So this we have purposely kept how to calculate, how the insurance company or your broker calculates the premium, subject to, of course, the insurance company's approval. So these are few factors we have purposely put this slide just to understand what are the permutation combinations possible in the rating pattern. And what dictates your premium. So of course, the number of workers, the nature of the industry, what is the salary or wage of the employees, what is the safety standard, what is the location of the risk, what is the previous claims experience. These all factors contribute in the underwriters deciding on your renewal premiums or fresh premium. Of course, if your policy is live, the claims experience will also be a very, very important factor in deciding the premium. As I told you, there's a rating which has been given, devised in the tariff advisory committee. The nature of work and industry type decides the rating. I mean, now there's a very, very important question which a lot of HR professionals request us our advice on, seek advice on, is how should the rating be done? What I mean to hear is, for example, in a factory, for example, if it's a plastic manufacturing or a chemical manufacturing company, there are various profiles of employees or workers. For example, some may be in accounting and administrative HR functions. The people will be there will be people in the shop floor, within them also skilled, unskilled, supervisory, managerial, and so on. And there will be security guards, there will be drivers. So what is advisable? Because there's one school of thought which says that every risk should be rated per se. The other option available under the WC policy is that you have one single rating for that particular industry. So we advise the second option, that one industry rating. Suppose if it's a plastic manufacturing, you rate all the risk under the plastic risk, but you also mentioned that the profile of people who are working in the factory, for example, as I told you, shop floor, the skilled, semi-skilled, unskilled workers, all accounting, administrative, including your sales staff, your office staff, your shop floor guys, your security guards, your drivers, so that you can there's a provision to mention that in the policy. So exclusions under the policy, what is not covered, injuries that are not fatal. कोई बहुत छोटी मोटी इंजरी है तो वो WC नहीं कवर करती है. Accident or injury caused under the influence of, अगर कोई वर्कर ने, if he is under the influence of alcohol और काम पे आता है और उससे कोई accident हो जाता है उसका, तो the policy may not cover, because the discharge card or the doctor will write a note which will ensure that the insurance company will reject the claim. So liability faced by contractor, this is something the contractor employs, but there's a provision to buy back this cover, and contractors and subcontractors, employees and workers can be covered under the policy. Third parties are not covered. Any vendors are not covered. So that will qualify under the public liability insurance. Only your employees will be covered, and your directly under the contract employees can be covered under the policy. So any change in the policy where the endorsements is not done or insurance companies are not intimated will of course be not covered. The last 2 points are very, very important and crucial, and where we have seen a lot of rejections, a lot of queries from HR professionals. First is gross negligence. This is something which is not part of the WC wording. We have in fact intentionally put this. So what is gross negligence is, suppose there's a machine which is running, and there's a play card on that, which there's a sign indicator which shows that कि इसके अंदर हाथ डालना मना है or handle with care. But still, if some employee or worker accidentally puts his hand inside, the insurance company may term that act as gross negligence. कि कौन ये
करेगा. So a person with a normal circumstances wouldn't have done that. So some insurance companies may take a stand that this claim is not payable because so it's a clear cut indication of gross negligence कि उसने अपनी ये जानबूझ के किया है या तो or insurance company claim reject. So here what is also very important is how you draft a claim document before you send it across to the insurance company to ensure that it comes under the admissibility or the scope of the policy coverage. Here I would request you to please reach out to us and we will let you know what is the best way to draft your incident note. Similarly, natural death, many cases where we have seen heart attacks or collapses of workers and then resulting in accident. So if the primary cause of death is because of any concussion or maybe heart attack, such kind of claims will not be payable. Natural death is of course not covered. Any accidental death and injury is only covered under the workman compensation policy. Okay, now this is a very important section where we have tried to blow out few myths versus facts. So myth is आप ये ऐसा सोच रहे थे शायद ऐसा है, but actually when you claim or when you buy the policy, the experience is something different. For example, the first is course of employment. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों का मानना होता है कि जैसे फैक्ट्री, घर से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और शाम को फैक्ट्री से घर की तरफ जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट होता है तो भी क्लेम मिलेगा. Whereas some insurance companies are purely of the view that this is not covered. आपने ड्यूटी रिज्यूम की, आपने पंच इन कर लिया, उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ही कवर होगा. या फिर आप घर से कोई ऑफिस के काम के लिए कोई डॉक्यूमेंट पिकअप या कोई काम के लिए अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो then still if you phrase it accordingly it will be covered. So insurance claims are all about documentation, right drafting of the policy to ensure any claims are not rejected. So that can happen only when you consult your claims consultant and then lodge the claim, I would request and recommend. So it's a gray area basically, but how do you put it across to insurance company will decide whether the insurance claim will be payable or not. The second is licensed contractor. This is something which we face across in a lot of mid-size SME, MSME companies, where so there is something called a labor license contractor, जिसके पास लाइसेंस है 100 लोगों को काम करवाने का, बट वो 300 लोगों को काम करवा रहा है. अभी इसमें lot of time the owner, the HR, they ask us कि भाई हमारे on record तो 100 ही है, what should we do? But here we very strongly recommend that you should go for the actual number of people, because अगर if you go, the insurance company make the payment even though the compliance may not be there, that doesn't come in midst of the claim settlement. So here we very strongly recommend that you should go for the actual number of people and not as per the labor license contract or any other compliances which you may have in place. See, uska reason kya hai ki because insurance company may appoint an investigator at a later date, and if the investigator comes and finds out the actual number of people working at the site were much higher, it can result into claim rejection. So this is very important aspect. Policy is unnamed basis. यस, ये सही बात है, WC में अननेम पॉलिसी होती है, बट इसका कई लोग अगर ये सोचे कि हम कम लोगों की पॉलिसी लेते हैं या वेजेस को अंडर डिक्लेयर करते, तो वी स्ट्रांगली रेकमेंड नॉट टू डू दिस. एज इट इज WC पॉलिसीज आर नाउ अवेलेबल एट वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स. मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये प्रेफर्ड बिजनेसेस है, और उसका रीजन है कि इसमें क्लेम्स कम नहीं है, इसमें सेटलमेंट्स कम है. और क्लेम्स का सेटलमेंट कम इसके लिए है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, ये जो WC पॉलिसी है, जैसे मैंने आपको बोला एक्ट पॉलिसी है, तो इसमें देयर आर मल्टी पार्टीज इन्वॉल्व इन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ऑफ क्लेम्स. और जहां पे भी मल्टी पार्टी इन्वॉल्व होता है वहां पे डिले होना लाजमी है. वहां पे ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई ड्राफ्ट उसको नहीं मिल रहा. अभी यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो WC एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, या वर्कर, एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है. इसमें WC कमिश्नर के अवार्ड्स लगते हैं जो बेसिकली कॉम्पेंसेशन के अमाउंट्स का कैलकुलेशंस देते हैं या रिवॉर्ड अमाउंट बताते हैं. इसमें हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स इन्वॉल्व है जो उनका ट्रीटमेंट करेंगे या उसके डिस्चार्ज कार्ड या उनका फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे. पुलिस FIR इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अभी अबव ऑल the
entire ये जो पूरे purview में the employee or the worker who is involved in the process are normally these people who work in the factory come from remote areas of India, and mostly they are illiterate, and that's why probably they are working on as unskilled workers. So here one of the challenges is because they don't understand, because the literacy level probably of those people is less, they don't understand the documents. They are not able to provide even basic documents like उनका खुद का डेट ऑफ बर्थ का या आधार कार्ड का प्रूफ नहीं होता है तो आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ होता है और वोटर्स आईडी कार्ड में अलग आधार डेट ऑफ बर्थ होता है, और सब में किसी में 1 जनवरी है और किसी में 1 अप्रैल है। और जैसे ही ये सब डेट्स आते हैं 1 जनवरी और 1 अप्रैल, एक्चुअली इसका मतलब ये उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये सिर्फ बनाने के टाइम में उन्होंने ये डाल के दे दिया। तो इस चीजों का इंश्योरेंस कंपनी दे ट्राई टू कट कॉर्नर्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन। सो claims are more, but the settlements are less. And one of the reason I told you, one is regulatory policy. The people involved are mostly illiterate. So it's a big task for the HR guys to handle and manage these claims. और उसके ऊपर top it up, क्योंकि इनकी इमीडिएट फैमिली एक्चुअली होती नहीं है जहाँ पे ये काम करते हैं, मोस्टली उनके जो रिमोट विलेजेस में इनकी फैक्ट। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट का, दे प्राइमरी केयर लेके ये सीधा अपने होम टाउन चले जाते हैं टू, बिकॉज वहीं पे उनके रिलेटिव्स है, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल शेप सो दैट द केयर कैन बी टेकन। और उसके वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन और डिले हो जाता है, कभी कभी वो 3 महीने 6 महीने तक वापस नहीं आते। और WC पॉलिसी में 90 दिन का प्रोविजन है, उससे ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो क्लेम डिलेड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्लेम रिजेक्ट होने चालू होते। Right. Now I come back to the point number 4, who can be covered. So normally the myth is workers, blue collar people can only be covered. But the fact is, as I told you, after the amendment in 2010, even the CEO of the company can be covered under the policy. That's one of the important amendments which happened post 2010. And by the way, employee compensation policy is a mandatory policy, irrespective of the location, whether ESIC is applicable or not applicable, because if an employee or a worker is working and during working hours, if something happens, the employer is responsible. And if the employee or his heirs come after the employer asking for damages, the compensation has to be payable, and this compensation can be made good by the WC policy. Point number 5, penalty to employer due to delay. So what happens is, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, normally क्या होता है, once there's a claim, you have to intimate to the WC commissioner. Sometimes some corporates, some companies do delay in intimating the claim. और उसके बाद award आने के बाद भी WC commissioner requires that award to be deposited at the WC commissioner office. एंड सम कॉर्पोरेट उसमें भी डिले करते हैं, साइटिंग के इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। सो आवर रिकमेंडेशन, यू शुड नॉट वेट, बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनीज मे टेक देयर ओन टाइम टू अराइव एट द एडमिसिबिलिटी एंड सेटलमेंट। अगर आप ये डिले करते हो तो WC कमिश्नर इस पे पेनल्टी लगा सकता है, फाइन लगाएगा, and that fine amount will never be paid by your insurance company. So for example, 10 लाख का compensation award किया WC commissioner ने, और because of the delay, suppose 2 महीने का delay हुआ, उसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का additional fine and penalty. So there is an interest which is levied on the amount, there's a fine which is levied, so that additional amount will never be made good by the insurance company. तो इसके अलावा वेजेस कभी कभी अनडिक्लेयर्ड होते हैं या अंडर इंश्योरेंस। अगेन आई रेकमेंड स्ट्रांगली, इवन दो इट्स एन अननेम्ड पॉलिसी, insurance companies are hiring investigators to identify what is the count of people working in the location at that particular time, date. So please avoid doing this. I would recommend to negotiate better with your insurance service providers, but not get into the under declaration thing. Point number 7, undefined. The myth is that WC policy covers only your factory location, whereas the actual fact is it can be covered across locations. Then the point is multiple contractors. Yes, the policy has the provision to cover all your contractors and subcontractors apart from the employees on the payroll. Yes.
So these are few myths which we have tried to bust it. These are basically with our experience. A lot of times the queries have come from the HR friends about their perception about the product, which we have tried to break and try to guide them what is the actual thing rather than what is their perception on the subject. Okay, now we come to a very important session, just 2 slides, and then I'll hand over to Monica for claims. Here we have tried to elaborate. See, ये जो compensation policy है, इसमें HR के पास कभी भी options होते हैं. Either they go for ESIC. ESIC, of course, is a mandatory thing. But why employee compensation? क्या मैं इनके लिए GPA या group personal accident ले सकते हैं? So we have tried to compare both the stuff, ESIC, employee compensation, and GPA. ESIC is not applicable for construction site workers, whereas employee compensation covers. ESIC में of course 21,000 के सैलरी का जो कैपिंग है उसके नीचे लोग वो और उसके नीचे लोग ही कवर होते हैं, whereas employee compensation में there is no such thing. So here sometimes वो एक ambiguity होती है कि भाई ये employee compensation में है, ये GPA में है, तो to avoid that ambiguity, और अगर आपने GPA लिया है तो then there should be very clear cut distinction. You should be aware who are covered under the ESIC and who you are covering under WC policies. Seasonal factories are not covered under ESIC, but in WC, yes, there is a provision. There is some mandatory minimum count of people ka requirement also. For ESIC applicable, but not for WC. There's nothing like that. Mines, railways are not covered under the ESIC, but same can be covered under employee compensation. Abhi point number 6, 7, and actually it is 8 are very, very important. थोड़ा मैं इस पे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. अच्छा, by the way, all the attendees, if you have any questions during the session, please type in the Q&A chat box. We'll be happy to take those questions at the end of the session. We are looking forward because we feel that this is the only way we'll improve our knowledge and try to come out with some advanced versions at later date. Okay, point number 6 में ESIC is covered only in government hospitals. Okay, यहाँ पे एक challenge क्या होता है कि once there's an accident, the HR would try to give the best care and immediate care to the deceased or the employee who has suffered the disability. So here, because of the restriction of the option, sometimes it may not work. Agar if it is not in the ESIC empaneled hospital. So this is one very important aspect. इसके अलावा ESIC में जो डेथ क्लेम्स या जो मेजर डिसेबिलिटी क्लेम्स के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो एन्युटी सेटलमेंट्स होते हैं. ESIC ऑफ कोर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. सो एन्युटी सेटलमेंट में उनको कोई 12,000 या 14,000 whatever is decided agreed or whatever is as per the table, वो monthly to the deceased और deceased के जो legal heirs है उनको मिलेगा. Whereas एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन पॉलिसी में या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में एक लमसम कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी या कोई भी में मिल जाता है, जो कि करीबन कोई 30 साल का बंदा है तो 14 से 16 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन बनता है. और दिस कम्स एज अ वेरी इमीडिएट एंड डिसेंट रिलीफ टू द डिसीज्ड रिलेटिव्स, जिससे वो they can also plan for any other financial thing, and probably they may try to move out from that particular location. So this works well in favor of the employee compensation. The concept of lump sum compensation of a decent amount being credited to the deceased legal heirs. So that's why we are in favor of employee compensation. इसके अलावा very recent development which has happened in the Gujarat state, they have implemented ESIC. So a lot of our HR and finance professionals were asking us whether we should discontinue ESIC. But then ESIC is very costly, of course, whereas if you compare that with WC, the rates, the premiums are very low. So most of our corporate HR professionals have decided to continue with the employee compensation even after think there is a volume issue. Your voice is not audible. Okay. Yeah, now it's okay. Okay. Right, Pratik, thank you. Is it okay now? Absolutely, sir. Thank you.
Okay, so I come to my last slide, I presume, which is again very, very important slide, which is GPA, group personal accident versus employee compensation. Again, वो problem of plenty वाली चीज है. HR कभी भी सोचते हैं क्या मैं WC लूं कि employee compensation लूं या GPA लूं. तो हमने वापस उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है on the 10 point parameters. I'll not dwell more. अगर if you have any queries related to this, you can always reach out to us and my sales team, and we'll be happy to consult you and advise you. But with the limitation of the time, I'll just briefly tell you exactly क्या होता है. GPA, of course, named policy, आपको नाम देना जरूरी है. WC is an unnamed policy. GPA और WC के coverages same है. WC, of course, is workman compensation. आप बोलोगे कि ये तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन हो गया, लेकिन आज भी लोग उसे WC के नाम, इन द मार्केट में ये फेमस है WC के नाम से, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो कंटिन्यूइंग विद दैट नेम. GPA में भी डेथ, डिसेबिलिटी, वीकली बेनिफिट कवर है, सेम WC में भी है. GPA में क्लेम डायरेक्टली क्लेमेंट को सेटल होता है, वेरएज WC में WC कमिश्नर अवार्ड देते हैं और उसके बाद उनके लीगल हेयर्स या एम्प्लॉय को ये क्लेम सेटल होता है. GPA का कंडीशन है कि एक्सटर्नल और वायलेंट होना चाहिए, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं, और वो 24 आवर चलता है, वर्ल्ड वाइड कवर चलता है. तो ये 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. WC में ऑफकोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही क्लेम आ सकता है, ऑफकोर्स विच कैन बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल थिंग. बट one important aspect here is that WC also covers you for occupational diseases, which is very difficult to define, which is very difficult to prove, but it can be actual or it can be alleged. And if the court or the commissioner gives in favor of the employee कि इसका hearing capacity आपके कंपनी में काम करने के बाद कम हुआ है, तो you are liable to make good that claim, right? So the occupational disease is an added advantage, but it is only covered while in the course of employment, and it's not covering you for, so 24 hours matlab after working hours is covered. Worldwide matlab within the factory, outside, or maybe you're traveling outside in outside India is also covered. GPA पॉलिसी WC अगर आपको नहीं लेना है, प्रोबेबली अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप हेल्थ और एक्सीडेंट पॉलिसी ले, तो शायद आप WC पॉलिसी लेने को अवॉइड कर सकते हैं. बट PA पॉलिसी अग्रीड बेनिफिट पे चलती है, मतलब आप 5 लाख ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट में आप सम इंश्योर्ड देते हैं, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और मे बी 3 times और 5 times दी एनुअल CTC. WC में आप कोई कॉम्पेंसेशन अमाउंट या सम इंश्योर्ड नहीं डिसाइड करते, आप सैलरी देते हैं, आप बताते हैं, आप इंडस्ट्री और वेजेस वगैरह बताने के बाद इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका एक फैक्टरिंग टेबल होता है जो मोनिका लेटर स्लाइड्स में बताएगी, और उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन पे होता है. PA अगेन ये मैंने डिस्कस कर लिया है 9 पॉइंट की एक्सीडेंट एक्सटर्नल वायलेंट मीन से होता है, वेरएज WC पॉलिसी को कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है. PA में स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं, WC के जो रेट्स होते हैं वो इंडस्ट्री वाइज डिफर करते हैं. सो समवन वर्किंग इन द माइनिंग इंडस्ट्री और फॉर एग्जांपल इन एक्सप्लोसिव्स और हाई हैजार्ड विल हैव हायर रिस्क कैटेगरी एंड दैट्स व्हाई हायर प्रीमियम. PA में ऐसा नहीं है, PA में अक्रॉस मोस्टली स्टैंडर्ड रेट्स ही एप्लीकेबल होते हैं. खाली 2 ही सवाल पूछते हैं कि आइदर यू आर वर्किंग एज अ मशीनिस्ट लेबर और यू आर सेल्स स्टाफ और यू आर एडमिनिस्ट्रेशन. वेयर WC में इंडस्ट्री वाइज रेट्स विल डिफर. प्लास्टिक्स, केमिकल्स में अलग अलग रेट्स होते हैं, ऑफिसेस के रेट्स और कम होते हैं, सो इट विल डिफर फ्रॉम रेट. So with this, I hand over the baton to Monica to take over on the claims process. Monica will take you through claims and all. Right, over to you, Prateek. Thanks. Yeah, thank you, Pramod sir, for giving us the insight and educating us on this product. Now, I would like to call upon my colleague Monica to guide us through the claims process and the challenges. As I said, Monica is into this industry since more than 15 years, and she has settled a lot of claims on the WC. So with her experience, she can guide us on the process and the challenges what we have faced during the last 17 years. Over to you. Thank you. Thank you, Prateek. And thank you, Pramod sir, for providing me an opportunity to, share my experience in claim processing and the challenges which many of the HR face, and we help them in getting a solution to their challenges and get a win-win situation for both the insured and the insurance company.
Okay, so the first step towards the claim process is an intimation. Intimation हमें within 24 hours देना है. Intimation process is very simple, wherein you have to just inform the corporate name, policy number, and the date and time of the incident, and the brief description of what has actually happened at the in the incident. This has to be intimated within 24 hours to us at the email, and your claim gets registered with the insurance company. After that, you have to submit the documents, all the required documents, which I'll brief you down the slides one by one. What all documents are required are to be submitted to the insurance company in the physical copy, that is the hard copy, and all the documents in originals. Once those are received at the insurance company's claim department, where the documents will be investigated and will be verified, and your claim will either be settled, or if there is any deficient document, you will get an intimation or a mailer receiving that this claim is deficient, and you have to submit the deficient document within the 7 days of the intimation received for the deficient documentations. And once again, when your last set of documents, that is your intimation last deficiency document, has been received, the claim would be settled within the 7 calendar days of your document. Now the next question what we frequently get from our HR कि मोनिका हमें compensation कितना मिलेगा? कुछ एक रफ आइडिया दे सकते हो, क्योंकि यूजुअली इन द केस ऑफ मिसहैप, और जैसे सर ने बताया कि जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉई है, दे बिलोंग टू द लोअर कैडर, तो उनकी फैमिली से भी कभी कभी हमें प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे को लगा है या हमारे रिलेटिव को लगा है, तो आप कुछ हमें फाइनेंशियल हेल्प इमीडिएटली कर दीजिए. तो इन सच केसेस वी हैव टू हमें बताना पड़ता है एक इंडिकेटिव फिगर कि इनका कंपनसेशन कैसे जाएगा. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि कैसे डब्ल्यूसी कमिश्नर या तो इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट टोटल या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट में एक कंपनसेशन अराइव करते हैं. तो से फॉर एग्जांपल डब्ल्यूसी एक्ट के हिसाब से जो मंथली वेजेस मैक्सिमम अभी एप्लीकेबल है वो 15,000 रुपया है. तो इन केस ऑफ डेथ 15,000 का 50% ऑफ द मंथली वेजेस, तो वो कितना हो गया? 7,500. 7,500 से फॉर एग्जांपल जिस बंदे की डेथ हुई है उसकी एज है 30 इयर्स की, तो उसका मल्टीप्लायर फैक्टर से फॉर एग्जांपल था कि 207.98, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कोई उसका हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंस हुआ है, वो कंपनसेशन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 के हिसाब से, तो करीबन 15 और 15.5 लाख ऑफ अमाउंट होता है, प्लस द मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल के जो भी अगर उसके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं वो एड ऑन करके उसको टोटल कंपनसेशन मिलता है. सेम गोज फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जहां पे 60% ऑफ द मंथली वेजेस के हिसाब से सारा कैलकुलेशन होता है एज पर द एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. Then for temporary disablement 25% of the monthly wages calculate होता है. इसके साथ अगर आपने मेडिकल एक्सटेंशन लेके रखा हुआ है तो उसका जो एक्चुअल आपका मेडिकल एक्सटेंशन का जो भी खर्चा हुआ है वो प्लस हो जाएगा. सो ये एक टेबल है जो डब्ल्यूसी कमिश्नर या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करके हमें कंपनसेशन पे अराइव करते हैं. जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बंदे की एज 30 इयर्स है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 207.98 होगा, तो उसके हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस होंगे. नाउ I'll run you through the list of documents which are to be submitted at the time of the claim. So मोटा मोटी हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. We have divided into 3 parts. So one set of documents are employee related documents, other is a corporate related document, and third and last is the authority related documents. So documents are to be submitted depending on the injury of the employee or the worker. तो injury और इंजरी किस तरीके की होगी? या तो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट होगा, परमानेंट पार्शियल या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होगा, या डेथ होगा. तो उसी के हिसाब से कॉलम में हमने टिक्स भी दिए हुए. तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हमें एम्प्लॉइज के देने हैं मैंडेटरी है, जो कि है क्लेम फॉर्म. क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन एंड स्टैम्प और पूरा भरा हुआ होना चाहिए.
if there is any difficulty, there is my team who will help you out in filling up those documents also. In fact, हम हमारे एचआरस के लिए इंडिविजुअली उनके फैक्ट्री प्रेमाइसेस पे या जूम पे हम ये ट्रेनिंग भी देते हैं बकायदा कि आपको ये क्लेम फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। हमें वैलिड एज प्रूफ देना है, आइदर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आईडी प्रूफ देना है, यानी कि कॉर्पोरेट का आईडी प्रूफ देना है, फोटोग्राफ देना है इंजर्ड का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वर्कर था, वो काम कर रहा था और कन्वेयर बेल्ट में उसका हाथ क्रश हो गया है, तो लेफ्ट हैंड की 4 उँगलियाँ या 2 उँगली उसकी क्रश हो गई, तो इमीडिएटली हमें उसका फोटो लेके वो फोटो भी हमें सबमिट करना होता है। देन वी कम डाउन टू कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स यानी कि एम्प्लॉयर हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा। तो प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन डेट ऑफ द एक्सीडेंट। पहले ही सर ने हमें आगे की स्लाइड में इम्पोर्टेंट बताया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हमें उस दिन पे कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जो हमें डिक्लेयर करना है अलॉन्ग विद देयर राइट wages. Brief description कंपनी के लेटर हेड पे देना है that how that incident had happened with the date, time and everything. लीव सर्टिफिकेट एक दूसरा फॉर्मेट है, लीव सर्टिफिकेट हमें देना है कि इस एम्प्लॉय को इस दिन को ये टाइम पे काम करते वक्त डूइंग दिस एक्टिविटी ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट और इसकी वजह से ही वाज ऑन लीव फ्रॉम सो एंड सो डेट। उसका वेज रजिस्टर देना है, अटेंडेंस स्लिप देना है, अटेंडेंस शीट देना है, सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 मंथ्स देना है, उस बाद देना है, जो कि सारी ही इंजरीज में एप्लीकेबल होगा। देन प्रूफ ऑफ कंपनसेशन डिपॉजिटेड विद डब्ल्यूसी कमिश्नर। इन केस अगर ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी या डेथ का केस है, तो हमें डब्ल्यूसी कमिश्नर का अवार्ड लगेगा, वो अवार्ड की कॉपी भी चाहिए होगी। और जो कंपनसेशन अवार्ड में हमें दिया गया है या डब्ल्यूसी कमिश्नर ने जो डिक्लेयर किया है, वो कंपनसेशन हमने उनके पास जमा किया है कि नहीं, उसका कुछ प्रूफ देना होता है इंश्योरेंस कंपनी में, जिसके बेसिस पे लेटर ऑन इंश्योरेंस कंपनी हमें वो अमाउंट रीइंबर्स करती है। देन अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप जब भी एम्प्लॉय को लगा है या वर्कर को लगा, इमीडिएटली आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो हॉस्पिटल में जो सारी आपने रिपोर्ट्स कराई हैं, टेस्ट कराए हैं, एक्सरेज है, ऑल द ओरिजिनल बिल्स, कंसल्टिंग पेपर, ये सारी कॉपीज हमें देना है। लास्ट एंड फॉर नॉट लीस्ट, अगर ये एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट हुआ है, मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर हुआ है, तो फिर हमें एफआईआर पंचनामा देना होता है, जो कि मैंडेटरी हो जाता है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और डेथ केसेस में। देन एमएलसी कॉपी इज मस्ट सारे ही केसेस में, भले ही वो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट हो, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो या डेथ केस हो। अभी ये एमएलसी होता क्या है? एमएलसी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है, जो कि हॉस्पिटल हमें इशू करती है, जिसका एक प्री प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हॉस्पिटल्स के पास होता है, जिसमें वो लिखता है कि जब पर्सन उनके पास गया तो वो क्या स्टेट में था और उसको वो इंजरी या वो फेटल एक्सीडेंट उसके साथ कैसे हुआ है, अलोंग विथ हॉस्पिटल का साइन एंड स्टैम्प, ये हमें सबमिट करना है। अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस है, तो हमें डॉक्टर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम डब्ल्यूसी कमिश्नर के पास सबमिट करके उनसे अवार्ड ले सकते हैं। अगर इन केस ऑफ डेथ है, तो अटेस्टेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए। इन केस अगर एक्सीडेंट रेलवे में हुआ है, तो रेलवे पुलिस का पंचनामा और रेलवे स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट चाहिए होगी कि क्या है। इलेक्ट्रोलेशन हुआ है, अगर मतलब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है फैक्ट्री में काम करते वक्त, तो सर्टिफिकेट लगेगा हमें स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और उनका पंचनामा लगेगा। मेडिकल फिटनेस टीटीडी के केसेस में मस्ट है, यानी कि टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट के केसेस में मस्ट है कि ये उसका टेम्पररी डिसेबलमेंट है, इस डेट को इनको इंजरी हुई थी, 2 हफ्ते के बाद ही विल बी फिट टू फाइन टू वर्क। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ पे मोस्टली एचआरस को डिफिकल्टीज होती हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, या उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हमें कभी क्या देना होता है। अगर मैंने एक्सप्लेन किया जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है पब्लिक प्लेस पे एंड इन्वॉल्विंग व्हीकल, तो हमें एफआईआर की कॉपी मस्ट है, पंचनामा मस्ट है और एमएलसी की कॉपी देनी है, अलोंग विथ
वर्कर या एम्प्लॉय जो ड्राइव कर रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। इसकी यूजुअली हमें क्वेरी आती है क्योंकि कभी-कभी ये हमारा मिस आउट हो जाता है। देन पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर। अगर ये रोड एक्सीडेंट था, तो हमें डॉक्टर से कंफर्मेशन चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए अलोंग विद द रिपोर्ट कि जब वो ड्राइव कर रहा था, वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा था, ये एक चाहिए। एम्प्लॉय आईडी प्रूफ चाहिए। एम्प्लॉय आईडी प्रूफ में क्या हो गया कि कंपनी का आईडी प्रूफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। कभी-कभी क्योंकि ये वर्कर्स हैं और स्पेशली ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के केसेस में होता है कि सारे कॉर्पोरेट्स उनको कॉर्पोरेट आईडी कार्ड इश्यू नहीं करते हैं, तो फिर हमें एक लेटर उनको लेटर हेड पे एक्सप्लेनेशन देके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना पड़ता है कि इस रीजंस की वजह से हमने इनका आईडी कार्ड नहीं दिया था। आप ये लेटर एज अ प्रूफ लीजिए और आगे क्लेम को प्रोसेस कीजिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में हम तो सिर्फ बोल देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन पास्ट में हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि एचआर जाते हैं डॉक्टर के पास, ट्रीटिंग डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि सर हमें इनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर एक लाइनर लिख के दे देता है कि ये बंदे को इस दिन को इंजरी हुई थी और 2 हफ्ते का उसको रेस्ट है, ही कैन जॉइन फ्रॉम 3rd वीक करके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसको इनकम्प्लीट मानती है और हमें वापस से रिजेक्शन आता है या डेफिशिएंसी आ जाती है कि आपने जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है वो इनकम्प्लीट है, तो हमें डॉक्टर को देना है। रादर वी हैव द फॉर्मेट रेडी विद अस। जैसे ही हमें कोई क्लेम इंटीमेट हो जाता है मेरी टीम से या मैं इंटरवीन होके एचआर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का केस है या टीटीडी का केस है, तो हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें आप डॉक्टर को बोलिएगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन करें, या हम फॉर्मेट ही दे देते हैं और आप बोलते हैं कि सर आप उनको रेप्लिका करवा लीजिए, या डॉक्टर को बोलिए थोड़ा-सा एडिट करके उनके लेटर हेड पे हमें दे दे, जो कि मेंशन करेगा कि नेचर ऑफ इंजरी क्या था, उनका डिसेबिलिटी पीरियड क्या था, उनको टोटल कितना रेस्ट लेना है, एमएलसी कॉपी उसके सपोर्टिंग में फिर हमें एमएलसी की कॉपी देनी होती है, उनका फर्स्ट कंसल्टिंग पेपर देना होता है और बंदा कभी फिट है जॉइन करने के लिए उनका एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होता है अलोंग विद द फिटनेस डेट। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो खाली लिख के दे देते कि वो 3rd वीक से जॉइन करेगा। अरे लेकिन 3rd वीक की कौन सी डेट से? ये सारी क्लैरिटी हमें डब्ल्यूसी कमिश्नर को भी देनी होती है और इंश्योरेंस कंपनी को भी एक एम्बिग्युइटी ना रहे और क्लियर रहे, उसकी वजह से ये डेट्स भी हमें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी होती है। लास्ट हमें पॉइंट नंबर 5th है जो कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर है फर्निशिंग। जैसे ही कि आगे मैंने मेंशन किया था कि हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का एक लेटर चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ था और ये बंदे को इंजरी हुई थी और वो अभी लीव पे है करके। तो उस सर्टिफिकेट में एम्प्लॉयर को यानी कि एचआर को उसका नाम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ जॉइनिंग, वो सारी चीजें ही मेंशन करके देनी है अलोंग विद द उसका सर्टिफिकेट ऑफ लीव, जिसमें डेट्स क्लियरली मेंशन्ड होगी कि भाई वो इस डेट से इस डेट तक छुट्टी पे है और ये डेट्स आपके जो डॉक्टर ने आपने को मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है उसके साथ मैच होनी चाहिए। अगेन अगर इन डेट्स में कुछ डिफरेंस होता है वापस इंश्योरेंस कंपनी से अपने को क्वेरीज आती है। तो ये सारा गाइडेंस मैं और मेरा टीम जैसे ही हमें क्लेम एक इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेरीज है ना परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी में ही हमें आता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 6 जहाँ पे अगर हमें कभी-कभी ऐसा होता है जैसे कि सर ने आगे बोला या मैंने भी बोला कि एम्प्लॉयर चाहता है कि हम डायरेक्टली इंज्योर्ड को ही पैसा दे दे, मतलब जिसको लगा है उसको दे दे, या वाइस वर्सा होता है कि एम्प्लॉयर बोलता है कि आप हमें पैसा दीजिए हम बाद में इंश्योर्ड को दे देंगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने उनके रिलेटिव्स को या एम्प्लॉयी को हॉस्पिटल में पैसे पहले ही भर दिए, तो वो सारा एडजस्टमेंट करके फिर वो इंश्योर्ड को देते। तो दोनों ही केसेस में हमें एक एनओसी देना होता है इंश्योरेंस कंपनी का, जिसका एक सेट फॉर्मेट है और एनएफटी फॉर्म भर के देना है और पास जिसके अकाउंट में हमें पेमेंट करना है उसका पासबुक का फर्स्ट कॉपी व्हिच हैज टू बी अटेस्टेड बाय द बैंक, या तो चेकबुक का लीफलेट जिसपे
जिसके नाम पे हमें एनएफटी करना है उसका नाम प्रिंटेड हो, आइदर ऑफ द टू। केस हमेशा, जैसे कि प्रमोद सर ने एक्सप्लेन किया था कि 90 डेज में काफी टाइम ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव ही नहीं होते बिकॉज एम्प्लॉयर अपने होम टाउन चला गया है, अरे एम्प्लॉई या वर्कर अपने होम टाउन चला गया और 90 डेज में हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें एचआर ने हमें प्रायर ही इंटीमेट कर देना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वर्कर या एम्प्लॉई इधर ही है लेकिन डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन और हम वो 90 डेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में हमें इंश्योरेंस कंपनी को प्रायर एक इंटीमेशन देके रखना है कि फॉर ड्यू टू सो एंड सो रीजन देयर वुड बी सम डिले इन सबमिशन, काइंडली कंसीडर आवर केस, जिसकी हमारा रोल है। तो आप हमें प्रायर ही इंटीमेट कर देना है। देन द पॉइंट नंबर 8 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला जब भी कोई इंजरी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में तो एचआर और बाकी लोगों का मेन फोकस होता है कि हम एम्प्लॉय को प्राइमरी केयर दे, उसको पहले डॉक्टर के पास लेके जाए, हॉस्पिटल लेके जाए, उसको ट्रीटमेंट दे। और इसी भगदड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें फोटो लेना है। लेकिन एक काइंड और हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के हम पहले जो भी इंजर्ड पार्ट है एम्प्लॉय का या वर्कर का, उसका हम एक कलर फोटोग्राफ ले ले, क्योंकि ये हमें सबमिट करना है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में और टीटीडी के केस में मैंडेटरी है, क्योंकि ये डब्ल्यूसी कमिश्नर को भी सबमिट होता है, जिसके बेसिस पे डब्ल्यूसी कमिश्नर बाद में अवार्ड भी देता है और इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो अराइविंग एट कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड टू हिम। तो कलर फोटोग्राफ एट द इवेंट के टाइम पे भी हमें फोटोग्राफ देना है और उनके रिकवरी के बाद भी हमें फोटोग्राफ सबमिट करने हैं। तो कलर फोटोग्राफ इज आल्सो मैंडेटरी। देन पॉइंट नंबर 9, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हमें देना है, जो कि परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट टोटल केसेस में होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेट डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट नहीं चलता है, उनको ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन जो सिविल हॉस्पिटल में है उनका ही लगता है। तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी आती है, तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखता है। बट बिकॉज हम जिस एरिया में काम करते हैं तो हमारा मेजर ऑफ द बिजनेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में है। तो कभी कभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट डॉक्टर्स का और ऑथराइज सर्जन का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलोंग विद द परसेंटेज भी एक्सेप्ट करते हैं। सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ होता है उस दिन का सारे एम्प्लॉयज का वेज रजिस्टर भी हमें सबमिट करना पड़ता है अलोंग विद द इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। हमें इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, विच इज अगेन अ मैंडेटरी, ताकि अंडर इंश्योरेंस का केस ना हो। पॉइंट नंबर 11 में, जैसे कि अगर हमें डब्ल्यूसी कमिश्नर से कंपनसेशन मिला है तो वो अमाउंट हमने, क्योंकि जैसे ही डब्ल्यूसी कमिश्नर हमें अवार्ड दे देता है या लेबर कमिश्नर हमें अवार्ड दे देता है तो हमें वो अमाउंट उनके पास जमा कराना पड़ता है और उसका एक कॉपी हमें फिर इंश्योरेंस कंपनी में देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी हमें रिम्बर्स करती। कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्योंकि हमें क्लेम बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया से आया है, यूजुअली ये सारे, जैसे कि मेरे पास एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कोई राजस्थान का रिमोटेस्ट एरिया था, वहां के लेबर कोर्ट में ये डब्ल्यूसी कमिश्नर ही नहीं अपॉइंटेड था 6 महीने तक। वी हैड टू वेट, वी हैड टू परस्यू इट विद द इंश्योरेंस कंपनी कि वहां पे कोई डब्ल्यूसी कमिश्नर ही नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। और वो केस हमने फिर होल्ड पे रखा था और जैसे ही डब्ल्यूसी कमिश्नर आया उनके पास हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अवार्ड लिया और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया। बिकॉज ऐसे जैसे ही सर ने पहले बोला था, अगर डब्ल्यूसी कमिश्नर का अमाउंट हम डिपॉजिट करने में डिले करते हैं तो हमें पेनल्टी भी लग सकती है, जो कि मैं पॉइंट नंबर 12 में आपको क्लैरिफाई करूंगी। या तो हमें जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में या अपना खुद के वेरिफिकेशंस में टाइम लगती है, तो हमें कमिश्नर को वो अमाउंट टाइमली देना है, वरना वो हमें पेनल्टी लगाएंगे जो कि अपने इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा।
Then comes very important point is point number 13 ki us din ko incident ke din ko at the time of the accident we have to provide the total number of employees present over there which has to match with the policy was taken. पॉलिसी में आपका क्या नंबर है और आपने लेटर पे क्या नंबर दिया है वो, वरना इंश्योरेंस कंपनी इसको पकड़ लेगी और अंडर इंश्योरेंस को बोल के इसको होल्ड पे रख देगी एंड देन विल हैव टू परस्यू इट देम एंड विल हैव टू गिव देम मेनी एक्सप्लेनेशंस कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एंड देन इट मतलब केस फिर और लंबा चलता जाएगा. कभी कभी कुछ रीजंस में जैसे कि इंजर्ड है या जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, डिक्लेयर्ड डेथ ऑन अराइवल हो जाता है, तो कुछ कुछ केसेस में हम पोस्टमार्टम भी नहीं कर पाते हैं. तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा कि हमने इस केस का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया था, जिसको वहाँ का लोकल अथॉरिटी से अप्रूव करा के गैजेट ऑफिसर और नोटरी करा के अटेस्टेड करके हमें ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं. नेक्स्ट हमारे टॉप 10 क्लेम्स हैं जो हमने पास्ट में सेटल करे हैं, विच आर फ्रॉम ऑल द एरियाज जो हमने आगे ब्रीफ किए हैं. आप डेथ बोल लो, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बोल दो, टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट बोल दो. हमने ये सारे ही केसेस एकदम अच्छे से और इंश्योर्ड को यानी कि एम्प्लॉयर को गाइड करके टाइमलाइन पे करवाए हैं. जैसे कि सर ने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस भी लेती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7 पे क्लेम है मिस्टर मनोज विश्वकर्मा का, इनका केस हमने कैशलेस में सेटल कराया था क्योंकि उनका इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन था एंड वो छुट्टी वाला दिन भी था. वहां पे जिस लोकेशन से हमें क्लेम आया था, तो हमने फिर भी काम कोऑर्डिनेट करके वहां पे उनको कैशलेस कराया था, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मतलब जिसको इंजरी हुई है एक पीस ऑफ माइंड से ट्रीटमेंट करा सके और हमने उनका सेटलमेंट करा दिया. With this, I'll conclude my presentation and over to you, Prateek, for vote of thanks. Yeah, thank you, Monica, for your time and guiding us through the process of claim process. I think we are already running short of time, so there's not much time left for the question and answer. But I'm surely I'd like to thank you all the participants for your time and attending the session. We'll be sharing with this the presentation, and maybe later on when you go through this presentation again, if there is any question arises, please connect to us over a call, or if you want, we can meet in person and we'll be more than happy to answer your queries. With this, I would like to thank again Pramod sir and Monica for this valuable insight on this product. And with this, I think we can end this session. Thank you very much. Thank you all the attendees. Thank you for coming, and please give your feedbacks and insights. We are still learning, even though we have more than 20 years of experience overall. But we are looking for your insights, and if you have any challenging claim, please refer to us. We'll be happy to help, because in a way we want to help also, and in that process we'll also imbibe some new knowledge and information which will help us improve ourselves. Thank you so much. Thank you. Thank you.